How to transfer USDT from OKX exchange to Binance exchange. In today's video, we will transfer USDT from OKX exchange to Binance exchange, and along with that, we will also see which network we can use to transfer our USDT from OKX to Binance with the lowest possible fees. So let's start the video. It's very easy. First, you need to open the OKX exchange on your mobile. After that, go to Assets. Open the Assets section. Then click on the Withdraw button, and after that, click on Crypto Withdraw and then select USDT from here. After doing this, you need to select On-Chain from here, and then a new page will open in front of you. First of all, let's go to Network and check which network has the lowest fee. On TRC, it's 2.5 USDT. On ERC20, it's 3.82 USDT. You can see below how high the fees are. But here, by using the TON network, we can transfer our USDT with just a 0.5 USDT fee. So we select the TON network from here. After this, we need to open the Binance exchange to get the deposit address. You open Binance in your mobile. After opening Binance, you need to go to the wallet and then go to support from there. After going to support, you need to click on the deposit button, then search for USDT and select USDT from there. As soon as you select it from here. After that, you need to select the TON network here for the deposit. For example, I am selecting TON from here. After selecting, it says here that you cannot deposit without a memo, so you must provide the memo ID here. Okay, so here you need to click OK. First, let's copy the deposit address. You need to copy your deposit address from here. After clicking OK, you have to paste the deposit address here. After that, you need to copy the memo here. Go back to the Binance exchange, and here you need to copy the USDT memo from here. After copying, you have to paste the memo ID in the comment section here. After this, where it says withdrawal amount, you need to type the amount of USDT here. Enter the amount of USDT you want to transfer, type in the amount you want to transfer, and then click the submit button here. Once you click the submit button, check the box here and continue, then click the confirm button. After you confirm, you will receive a code on your email and on Google Authenticator. First, paste the code from your email here, as I am doing now, and then paste the code from Google Authenticator here. After pasting, click confirm here. Once you confirm, your withdrawal request will be submitted. When you go to view details, you will see your transaction history here. All your details will be displayed in front of you. Right now, the status is pending. फिलहाल पेंडिंग में है। यहाँ पर एक दो मरतबा पे रिफ्रेश करें। 30 सेकंड से 40 सेकंड तक का टाइम लग सकता है, और यहाँ पर आपकी जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है जो इन प्रोग्रेस में चली जाएगी। यहाँ देख सकते हैं जो रिक्वेस्ट है इन प्रोग्रेस में चली गई है। यहाँ पर तकरीबन 40 सेकंड गुजर चुके हैं, 1 मिनट तक का टाइम तकरीबन गुजर चुका है। अब हम यहाँ पर बाइनांस में जाकर इन डिपॉजिट चेक करते हैं, और यहाँ पर एक मरतबा पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 15.61 USDT जो हमने ट्रांसफ़र किए थे वो हमें बाइनांस एक्सचेंज मिल चुके हैं। यहाँ पर भी तकरीबन 30 सेकंड लगेंगे, और यहाँ पर जो कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन रिक्वेस्ट जो है वो हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब हम स्पॉट वॉलेट में जाकर अपने USDT यहाँ से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो USDT हैं वो हमें बाइनांस एक्सचेंज के सपोर्ट वॉलेट में रिसीव हो चुके हैं। तकरीबन 1 मिनट का टाइम लग जाता है। तो आप इस तरह से कम फीस में OKX एक्सचेंज से बाइनांस एक्सचेंज में USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेटवर्क आपका सेम होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।